Hello friends, welcome back to the series of lectures. This is the 28th lecture of this series of CPC. And in this lecture we would start with order to rule 2 and compare that with the res judicata. For that, first of all we have to study the section 12. So let's take out section 12 of CPC. So section 12, where a plaintiff is precluded by rules. Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. Now देखो, section 12 is only a declaratory provision. Section 12 is merely a declaratory provision which clearly declares that if the rules, various rules, there are various rules in the orders, order 1, order 2, order 3, etc. तो in those there are various rules. तो अगर किसी रूल में किसी एक particular cause of action पर suit is prohibited, if in some rule on a cause of action, if the suit is prohibited, then the party shall not be allowed to file the suit. अगर किसी रूल में किसी cause of action पर सूट करने को प्रोहिबिट किया गया है, then the party cannot file the suit. So that is what they are simply declaring in section 12. So if you read it again, where a plaintiff is precluded means what? Prohibited. Precluded by rules. Rules means जो orders के साथ rules हैं, from instituting a further suit in respect of any particular cause of action. मतलब पहले एक सूट कर दिया था, अब फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए रूल के थ्रू उसे प्रोहिबिट किया गया है ऑन दैट काउज ऑफ एक्शन. So he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action. He shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. ठीक, मतलब किसी कोर्ट में आप वो सूट फाइल नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर प्रोहिबिशन है तो. ठीक, तो इट इज ओनली अ डिक्लेरेटरी सेक्शन एंड इट इज डिपेंड ऑन सर्टेन रूल्स. जहाँ जहाँ किसी रूल में लिखा है कि पहले तुमने ये सूट किया था और आप सूट नहीं कर सकते, तो हर उस रूल को सेक्शन 12 के साथ पढ़ा जाएगा. एंड ऑर्डर टू रूल 2 इज वन सच एग्जाम्पल. ऑर्डर टू रूल 2 इज वन सच एग्जाम्पल. तो इसके साथ कुछ ऑर्डर्स आप पढ़ोगे, कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑर्डर्स के कुछ रूल्स हैं, उसके साथ सेक्शन 12 को पढ़ोगे तो उनको लिख लो आप. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑर्डर टू रूल 2, यू विल रीड सेक्शन 12 विद ऑर्डर टू रूल 2, देन यू रीड सेक्शन 12 विद ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 4, and order 23 rule 1 sub rule 1, then order 23 rule 3a. So these are some rules which are prohibitory कि पहले अगर एक सूट डिसाइड हो चुका है तो अब दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पर सूट नहीं कर सकते. अब इसमें से right now we have to discuss order 2 rule 2. We will discuss one by one all, but right now we will discuss order 2 rule 2. अब बताइए what is the connection between this section 12 and order 2 rule 2. So you have to read section 12 together with order 2 rule 2. Now take out the order 2 rule 2. So it is saying every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish a portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. So here they are talking about claim. जैसे मान लो मेरा आपके ऊपर 50 लाख रुपए का क्लेम है. Suppose I have given a loan to you for 50 lakh rupees and later I file a suit to recover the money. Now the rule says that I must claim the entire claim before you.
जब मैं कोर्ट में सूट करूंगा, आई मस्ट क्लेम द एंटायर 50 लाख रुपीज। और अब मेरी मर्जी है कि आई मे क्लेम ए लेसर अमाउंट ऑल्सो। अगर 50 लाख रुपए का क्लेम करूंगा तो पर्टिकुलर ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट में, पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शनल कोर्ट में करना पड़ेगा मेरे को सूट। अब इसमें अगर मान लो मैं 15 लाख क्लेम किए, बाकी के छोड़ दिए, तो मैं लोअर कोर्ट में चला जाऊंगा उससे, whichever court is having that much pecuniary jurisdiction। मान लो 2 लाख रुपए क्लेम किए मैंने, तो सिविल कोर्ट में चला जाऊंगा। तो इसमें मेरी मर्जी है कि मैं पूरा क्लेम करूं या उसका कोई पोर्शन, in order to bring the suit in the lower court I will claim only a certain part। लेकिन मान लो अगर मैंने लेसर अमाउंट क्लेम किया, I only claimed 16 lakh rupees, 34 lakh I left। अब can I file the subsequent suit for claiming the remaining 34 lakhs? So that is the question। तो इसके लिए आप सेकंड सब रूल पढ़ो, रूल 2 का। Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। क्लेम relinquish कर दिया था, छोड़ दिया था, तो बाद में दोबारा सूट करके relinquish portion क्लेम नहीं कर सकते। ठीक, here we are talking about a claim for damages। जैसे आपको लगता है मेरा damages 5 लाख का होना चाहिए और आपने क्लेम किया सिर्फ 1 लाख का, 4 लाख छोड़ दिया, तो क्या दोबारा सूट करके 4 लाख क्लेम कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक क्लेम है 10 एकड़ जमीन पर, यू आर क्लेमिंग possession of for 10 acres of land, but you will not claim 10, you only claim 6, 4 acres of land you left। So can you subsequently file the suit claiming the remaining 4 acres of land? So if you have got a particular claim, you must make the entire claim in the suit, else if you have deliberately relinquished a particular portion of your claim, then subsequent suit करके आप उसको claim नहीं कर सकते। And the reason is very simple, that the multiplicity of proceedings shall be avoided। So you have to make the entire claim and not just a part of that। और अगर आप ऐसा करते हो तो अदरवाइज जो relinquished जो पोर्शन था उसके लिए आप दोबारा सूट करने के लिए अलाउड नहीं हो। अब थर्ड क्लॉज पढ़ो आप। A person entitled to more than one relief of same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। ठीक, अब यहाँ पर they are talking about reliefs, पहले वाले में they are talking about claim, here they are talking about अगर एक कॉज ऑफ एक्शन पर आपके पास एक से ज्यादा रिलीफ हैं तो सारे रिलीफ का क्लेम आपको उसी सूट में करना चाहिए। अगर आपने कोई रिलीफ यहाँ पर रिलिंक्विश कर दिया है और आप उस रिलीफ के लिए दोबारा सूट करोगे तो वो सूट अलाउड नहीं होगा, unless he has obtained the permission of the court। ठीक, so सब रूल 1 और 2 में they are talking about plaint and सब रूल 3 में they are talking about relief। तो फर्स्ट सब clause, second sub clause in this they are talking about claim, in this third sub clause they are talking about relief। अब in this मान लो फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ए जो सूट फाइल करेगा इन दैट he wants the claim, he got the claim of what?
डैमेजेस मांग सकता है। तो वो कौन कौन से रिलीफ मांग सकता है? एक तो डैमेजेस मांग सकता है, या फिर ही वुड डिमांड द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये जो दो हैं आपस में एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, यू विल टेल रिलीफ, यू विल से इट रिलीफ। तो इन दोनों को आप आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में बोलोगे आप रिलीफ। ही विल हैव द रिलीफ ऑफ डैमेजेस प्लस ही विल हैव द रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब व्हाट थर्ड क्लाउज इज सेइंग इज, अगर आपके पास दो रिलीफ्स हैं और आप दोनों क्लेम कर सकते हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू दोज रिलीफ्स, you are having the legal capacity to claim those reliefs, then you must claim all। और जैसे इसमें आपने पहले सिर्फ डैमेजेस क्लेम किया और बाद में दूसरे सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। So that is what the indication of clause 3. So if you are having more than one relief, then you must claim all the reliefs provided you are entitled for those reliefs। अगर आपने क्लेम कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर दोबारा अगर उसी कॉज ऑफ एक्शन पर सूट करोगे तो वो जो रिलिंक्विश्ड रिलीफ था उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले रिलिंक्विशमेंट के समय कोर्ट से परमिशन ले लिया था कि मैं बाद में अगर दोबारा सूट करूं तो मुझे अलाउ कर देना, एंड द कोर्ट हैड परमिटेड यू, देन इट विल बी परमिसिबल। लेकिन अगर मैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, if I had relinquished the particular relief, then for that claim, for that relief, for same cause of action, then for that relief, for the same cause of action, you cannot file the other fresh suit। ठीक। और जब आप क्लेम की बात करते हो, इधर जो क्लेम की बात कर रहे हैं, क्लेम इज बेसिकली रेफरिंग टू अ सिंगल रिलीफ। अब जैसे मान लो कोई डैमेजेस है, आपका डैमेजेस है मान लो 5 लाख रुपए, और आपने डैमेजेस क्लेम तो किया लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपए का किया, आपने 3 लाख क्या किया, आपने रिलिंक्विश कर दिया। सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द क्लेम्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ, सो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनी वन रिलीफ एंड उस रिलीफ का पूरा क्लेम। तो एनी वन रिलीफ जैसे डैमेजेस, मनी, तो एनी वन रिलीफ एनी वन रिलीफ एंड उस रिलीफ का पूरा क्लेम, यू मस्ट क्लेम दैट रिलीफ इन टोटलिटी, यू मस्ट क्लेम दैट रिलीफ इन टोटलिटी। एंड इफ यू क्लेम एनी पार्ट ऑफ दैट रिलीफ, देन इन सब्सिक्वेंट सूट यू कैन नॉट क्लेम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिलीफ। तो रिलीफ एक सूट में एक से ज्यादा रिलीफ अवेलेबल है, सारे क्लेम करो, provided you are entitled to claim it। ठीक, provided you are entitled to claim it। ठीक, unless you have taken permission from the court और बाद में उसको क्लेम कर। तो विदाउट कोर्ट्स परमिशन आप उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से दूसरा रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। और जबकि क्लेम इज एक रिलीफ के अंदर जो भी पूरा क्लेम बनता है वो पूरा क्लेम आप एक साथ क्लेम करो, अदरवाइज बाद में रिलिंक्विश क्लेम के लिए आप सूट नहीं कर सकते उसी कॉज ऑफ एक्शन पर। और क्लॉज 1 और 2 में तो इनफैक्ट कोर्ट की परमिशन से भी आप बाद में किसी रिलिंक्विश्ड पार्ट के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई कोर्ट की परमिशन की बात की नहीं गई है। कोर्ट के परमिशन की बात की गई है रिलीफ के केस में, ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम के केस में ये बात नहीं की गई है। सो यू हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के परमिशन की बात रिलीफ के केस में की गई है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम के केस में नहीं की गई। सो यू हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट इफ यू रिलिंक्विश relief, and if the court permits, you can always file a fresh suit to claim that relief on the same cause of action. But if the court has not permitted, or if he had not obtained the permission of the court, then subsequent suit will not be allowed. So when you file a suit for claiming a particular relief, तो उस particular relief का जो entire claim है that should be claimed by you, and if you are relinquished the part of it, then in the subsequent suit that cannot be allowed
if you file a suit on a same cause of action. ठीक, is that fine? So that is what broadly order to rule 2 says. तो इसमें लिख लो आप कुछ. So write as per order to rule 2, read with section 12. If a suit has been already filed with respect to a particular claim or relief upon a particular cause of action, then if a part of claim was relinquished, or if one of the reliefs to which the plaintiff was entitled was relinquished, then in a subsequent suit upon the same cause of action, the relinquished claim or a relief cannot be claimed. In the case of relinquishment of or a relief cannot be claimed. In the case of relinquishment of relief, the plaintiff could have sought the permission from the court for filing a subsequent suit, and if in such subsequent suit the relinquished relief is claimed, then it will be allowed. The mere purpose of order to rule 2 is to prevent the multiplicity of proceedings. Thus, it is the duty of the parties to make the suit comprehensive and to claim all reliefs in the same suit. Take the mere purpose of order to rule 2 is to prevent the multiplicity of proceedings, and it is the duty of the parties to make the suit comprehensive and to claim all reliefs in the same suit. So read order to rule 2. Every suit shall include the whole of the claim. Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. So basically the first clause is talking about a claim. Now I already told you that upon a cause of action, a person may be having several reliefs. Relief 1, relief 2, etc. Now with respect to any one of the reliefs, he had got a particular quantum of claim. And you know that what is quantum of claim. For example, damages. He has got a particular quantum of damages that he can claim. For example, the piece of land. He can claim the entire piece of land. So when they are using the word claim in the first paragraph, first clause, they are basically referring the entire claim with respect to one relief. They are not talking about reliefs. They are talking about the entire claim with respect to one relief. And if a person A has got a cause of action, he has got two reliefs. So as far as clause 1 and 2 are concerned, they are related to every single relief, and whatever claim he has got with respect to one relief, that he has to claim in totality. But he has a discretion to relinquish a part to that claim. मान लो उसके पास 10 लाख रुपए का कोई क्लेम है, अब वो चाहे तो पूरा 10 लाख क्लेम करे और चाहे तो उसमें से सिर्फ 6 लाख क्लेम करे, 4 लाख relinquish कर दे if he wants. But the point is, he has relinquished the 4 lakh rupees. Then can he file the subsequent suit to claim the 4 lakh rupees? For this, second clause says no. If you read the first and second clause again, every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. So that is the discretion of the plaintiff. अगर वो चाहता है, मान लो कोई सूट 10 लाख का था और वो चाहता है कि मेरा सूट लोअर कोर्ट में रहे, सिविल कोर्ट में जाए, और मान लो सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन 3 लाख की है, तो वो चाहे तो 7 लाख छोड़ दे और 3 लाख क्लेम करे. So in that way it is his discretion as to release a particular part of claim or not. But the second clause says
where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. Now, omitted means generally he has not claimed. Relinquish means he has generally declared that I am not claiming that. It is लगभग वन एंड द सेम थिंग. अगर आपने अपना रिलीफ का किसी रिलीफ का एक कोई क्लेम छोड़ दिया है, कुछ पार्ट ऑफ द क्लेम छोड़ दिया है, then even with the permission of the court you cannot claim because permission of the court का scope यहाँ पर है नहीं. So the first and second clause they are not talking about the permission of the court. They are simply saying that if you have relinquished, then you cannot file a subsequent suit and claim that relinquished part. So read the second clause again. Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. So first thing we get from order to rule 2 is that suppose there are several reliefs. Suppose for this cause of action there are several reliefs, relief 1 and relief 2. Now suppose in this relief he relinquishes a part of that claim. If he relinquishes the part of the claim, then second suit is barred if he files the second suit for the relinquished deed, relinquished portion. Now third part you see, a person entitled to more than one relief in respect to the same cause of action. A person entitled to more than one relief in respect to the same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. So it is clear that suppose if he has two reliefs on that particular cause of action, his duty is to claim all the reliefs. जबकि first clause में his duty is to claim the entire amount to that claim. The third clause के अनुसार he has to claim this also and this also. But suppose if he relinquishes this one, then in the subsequent suit he cannot claim this relief unless he has obtained the permission of the court. Earlier court, to claim that relinquished relief in the subsequent suit. ठीक, तो जब आप एक relief relinquish करते हो तो कोर्ट से परमिशन ले सकते हो that I am relinquishing that relief and I shall be permitted to file the fresh suit to claim that relinquished relief. तो तब तो you can do it. Otherwise without permission, किसका परमिशन? जो पहले वाला सूट किया था उस कोर्ट का परमिशन उसी समय लेना पड़ेगा जब आपने रिलिंक्विश किया था. बाद में परमिशन नहीं मिलेगा. जिस समय आपने रिलिंक्विश किया था, जहाँ पे सूट फाइल किया था, उस कोर्ट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा. That I shall be allowed to file the suit again for the relinquished deed. तब तो allowed है, otherwise it is not allowed. So if you read that again, a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits except with the leave of the court to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. So the point you have to observe is they are using the words same cause of action. Now suppose A had a cause of action against B. And on this cause of action A has got two reliefs, relief 1 and relief 2. Now A files a suit against B claiming relief 1. अब relief 2 उसने relinquish कर दिया और कोर्ट से कोई परमिशन भी नहीं लिया उसने. अब subsequent suit when he files A versus B,
and now he is claiming relief too. Will this suit be allowed? No, but there it is important to examine that the cause of action is same. अब हो सकता है कि ये रिलीफ वो किसी और कॉज ऑफ एक्शन पे क्लेम कर रहा हो, लेकिन जो बार लगेगा जो बार लगेगा वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे लगेगा, उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे लगेगा. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रोविजन. द बार विल अप्लाई विद रेस्पेक्ट टू द सेम cause of action. So if he is filing the suit on a distinct cause of action, then order 2 rule 2 will not apply. So जो कोर्ट का सबसे important examination होगा, that will be number 1 as to whether the cause of action of the earlier suit and the cause of action of the present suit are the same. Whether the cause of action are the same, number 1. And number 2, the relief that he is claiming now, was he entitled to claim earlier, and will he relinquish that relief? If the answer is yes, then only the bar of the order 2 rule 2 will apply. ठीक, फिर से समझो. ए ने पहले एक सूट किया एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर अगेंस्ट बी एंड क्लेम्ड रिलीफ 1. अब नाउ A again filed a suit. Now the first suit is decided. Now he again filed a suit on a cause of action against B and claims relief 2. Now this B raises the plea of order 2 rule 2. B objection raise करेगा that this suit is barred by order 2 rule 2. Now the burden of proof of B is to prove number 1, that the cause of action of the present suit and the cause of action of the former suit are the same. And number 2, the relief that they are claiming here, this relief was such a relief which he was entitled to claim in the former suit. अब मान लो फॉर्मर सूट में वो उस रिलीफ को क्लेम करने के लिए एंटाइटल नहीं था, तो फिर रिलिंक्विशमेंट कैसे होगा? He was not entitled to relinquish that relief in the former suit, then that means it was not relinquished. So relinquishment तो तब होगा when he was entitled and he knows that he was entitled and फिर he left the relief. So these two are the most important things which was the burden of proof on the B. और उसके लिए what shall the B do? Particularly ये प्रूव करने के लिए कि cause of action same है, what shall B do? B की क्या ड्यूटी होगी? How shall he prove? Similarity of cause of action कैसे प्रूव करेगा? For that he has to produce the copy of the plaint of the previous suit. He has to produce the plaint of the previous suit. Judgment से काम नहीं चलेगा. He has to produce the copy of the plaint of the previous suit. और उस plaint की कॉपी को देखकर the court will infer the cause of action in the former suit, and on the basis of the present suit's plaint, the court will infer the cause of action of the present suit, and then the court will decide as to whether the cause of action is same or not. ठीक, तो जजमेंट नहीं देगी कोर्ट, पहले सूट का प्लेंट देखेगी, तो उससे निकालेगी कि पहले में क्या कॉज ऑफ एक्शन था, और दूसरे सूट का प्लेंट देखेगी, उससे देखेगी क्या कॉज ऑफ एक्शन था, और फिर तब डिसाइड करेगी दोनों कॉज ऑफ एक्शन सेम है या डिफरेंट. ठीक, अब मान लो डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया था दैट ऑर्डर 2 रूल 2 विल अप्लाई. सपोज द डिफेंडेंट रेजेस द ऑब्जेक्शन दैट द ऑर्डर 2 रूल 2 विल अप्लाई, बट he does not produce the copy of the plaint, but he does not produces the copy of the plaint of the previous suit. अब कोर्ट तो अपने आप तो प्रीवियस सूट के प्लेंट की कॉपी नहीं लाएगा. अब द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द डिफेंडेंट. तो अगर डिफेंडेंट ने प्रीवियस सूट के प्लेंट की कॉपी नहीं लगाई, then the objection or the plea shall be dismissed. The objection of the B is dismissed, and order 2 rule 2 will not apply. So that is the most important thing कि cause of action की similarity प्रूव करने की ड्यूटी डिफेंडेंट की है, और डिफेंडेंट का ड्यूटी है कि वो अपने प्रीवियस प्लेंट की कॉपी लगाए
क्योंकि जो प्लेंट्स की प्लीडिंग्स हैं उसके एग्जामिनेशन के बाद ही कोर्ट को समझ में आएगा एज व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन। रिटन स्टेटमेंट की कॉपी नहीं देखेगा कोर्ट, बिकॉज रिटन स्टेटमेंट डज नॉट क्लियर द कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंटिफ की प्लीडिंग्स विल डिक्लेयर द कॉज ऑफ एक्शन and therefore the plaintiff pleadings will examine in the present suit as well as in the former suit. If he does not present the pleadings of plaintiff in the former suit तो देखो प्रेजेंट सूट का प्लेंट तो कोर्ट के पास है, अब प्रीवियस सूट का प्लेंट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड इफ दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड then the court will not allow the objection and the objection shall be dismissed. ठीक. Now if you look at the provisions once again, a person entitled to, third clause, a person entitled to, you see the words, a person is entitled to more than one relief. Now the word entitled to means what? जब उसने previous suit file किया था, then he was entitled to the relief that he claimed in the former suit, and he was also entitled to claim the relief now he is claiming in the subsequent suit. और अगर वो entitled नहीं था, if he was not entitled, then obviously he could not have claimed the relief in the former suit. So therefore one requirement is that the defendant shall prove that in the subsequent suit the relief that he is claiming today, that relief was available to him at the time of the former suit. Then only he will say that he was entitled, and then he will say that he has relinquished by not claiming it. A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action. They are using the word same cause of action. So that is the very important thing, most important thing to prove. क्योंकि अगर cause of action में जरा सा भी difference आ जाए, because every fresh cause of action, every distinct cause of action gives you a distinct right to file the suit. Every distinct cause of action gives you a distinct right to file a suit. Therefore, the cause of action should be the same. Same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of the court, leave मतलब permission of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. He shall not afterwards sue for any relief so omitted. तो एक बार जो रिलीफ उसने रिलिंक्विश कर दिया उसको वो दोबारा क्लेम नहीं कर सकता। ठीक। नाउ यू सी, आपको सेक्शन 12 के साथ कौन कौन से प्रोविजन पढ़ने वो तो मैं बता चुका हूँ। अब इस पर थोड़ा लिखो आप। फर्स्ट थिंग वी राइट इज पर्टिकुलरली वी talking about clause 3, that is more important. I will dictate on both, but particularly we will talk about clause 3, that is more important. अब एक पैराग्राफ तो आप लिखो सब रूल 1 and 2 के लिए, ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 1 and 2, ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल्स 1 and 2, ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 1 and 2 are related to the relinquishment of a part of the claim which the plaintiff has against the defendant. It is the duty of the plaintiff that he shall make the entire claim with respect to a particular relief, and if he omits to claim a part of it, then he cannot make the relinquished claim in the subsequent suit. If he omits to claim a part of it, then he cannot make the relinquished claim in the subsequent suit. ठीक, ये आपका clause 1 और 2 से related है। अब next paragraph में जाओ। Order 2 Rule 2 Sub Rule 3 provides for the plaintiff's duty. Order 2 Rule 2 Sub Rule 3 provides for the plaintiff's duty to claim all the relief to which he was entitled
entitled on that cause of action, and if he does not do so, and also on that cause of action, and if he does not do so, and also he does not take the permission of the court to file a suit to claim the relinquished relief subsequently, then such a subsequent suit on the same cause of action shall be barred. The essential requirements are number one, the defendant shall prove. Burden of proof तो defendant का ही होगा. The defendant shall prove that the relief claimed in the present suit was such a relief to which the plaintiff was entitled at the time of filing the former suit. Number two, the defendant shall prove that the cause of action in the present suit is the same as that of the former suit. And next paragraph, the burden of proof is strict upon the defendant. अब एक केस लिखिएगा यहाँ पर, गुरुबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल. It was 5 judges bench and it is 1964 Supreme Court and judgment delivered by a younger justice. Gurubaksh Singh versus Bhuralal, 1964 Supreme Court. So write down upon this case. The court held that the burden of proof is strict upon the defendant, and it is the defendant's duty to prove the above two elements. जो पहले लिखवाया था अभी. It is the defendant's duty to prove the above two elements. These two elements. आगे लिखो. The court also held that the cause of action can be proved by examining the plaint of the former suit and also the plaint of the present suit. The written statement is not required. If the court deems fit, then the court, in order to examine the cause of action, it may also examine the parties and witnesses of the two suits. मतलब कोर्ट मान लो पिछले सूट का cause of action देखता है, तो कोर्ट प्लेंट की कॉपी देखेगा कि what legal right were involved, and the court accordingly will see what was the cause of action, that what right is involved and what right is violated. But if the court thinks that looking of the plaint is not sufficient, उससे क्लियर नहीं हो पा रहा, तो कोर्ट फिर पिछले सूट की जो पार्टीज हैं और जो कि इस सूट में भी वही हैं, तो उनको बुलाकर एग्जामिन कर सकता है, और चाहेगा तो कोर्ट किसी विटनेस को बुलाकर भी एग्जामिन करेगा, लेकिन मेरिट्स के लिए नहीं. नॉट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द कॉज ऑफ एक्शन. सिमिलरली इन द प्रेजेंट सूट ऑल्सो, अभी तो ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 का ऑब्जेक्शन शुरू में ही लगता है. यू कैन अप्लाई एनी टाइम, बट नॉर्मली इट विल अप्लाई इन द बिगनिंग ओनली. अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी द कोर्ट कैन एग्जामिन द पार्टीज and examine the witnesses. The witnesses can be called to examine not the merits of the case, but to examine only the fact as to what is the cause of action. अब इसमें आगे लिखिए. It was held that if the defendant who raises the objection of order to rule 2 does not produce the copy of the plaint of previous suit, the objection will not be heard and shall be dismissed. मतलब अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया ऑर्डर टू रूल 2 का और आपने प्लेंट की कॉपी नहीं लगाई, तो आपके ऑब्जेक्शन पे हियरिंग भी नहीं होगा. यू विल बी गिवन टाइम टू सप्लाई द कॉपी ऑफ प्लेंट ऑफ द प्रीवियस सूट, एंड इफ यू डू नॉट डू दैट, देन आपका ऑब्जेक्शन डिसमिस करके कोर्ट विल कंडक्ट द ट्रायल. आपका ऑब्जेक्शन डिसमिस करके कोर्ट ट्रायल आगे कर देगा and will go on to pass a decree.
So it is the defendant's duty to raise the objection and to produce the copy of the plaint. Is that fine? Now एक और इस sentence लिखो next paragraph में. It was also held that if the cause of action was also found to be different, if the cause of action are found to be different, then order to rule 2 will not apply, as every distinct cause of action gives a distinct right to file a suit. As every distinct cause of action gives the distinct right to file the suit. Fine. तो cause of action अगर different है तो फिर order to rule 2 नहीं लगेगा, क्योंकि हर distinct cause of action पर distinct suit file करने का आपके पास right है. ठीक. अब एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा, जवाब दीजिएगा. सपोज ए के पास बी के खिलाफ एक कॉज ऑफ एक्शन है, एंड द कॉज ऑफ एक्शन इज दैट द बी हैज इलीगली डिस्पोजेस्ड ए फ्रॉम हिज प्रेमाइसेस, फ्रॉम हिज हाउस. बी ने ए को इलीगली उसके मकान से डिस्पोजेस किया है. बी हैज illegally dispossessed A from his house and kept in his possession for 2 years. B ने उस मकान पर 2 सालों से illegally कब्जा कर रखा है. Now A files a suit against B. A files a suit against B claiming possession of the house. But in this suit he does not claim masonry profits. उसने masonry profit इसमें claim नहीं किया. He did not claim masonry profits. A suit is decided. Later on the suit is decided in his favor. Later on A again filed a suit against B against the same cause of action for dispossession. लेकिन इस बार he claimed the relief of masonry profits. This time he claims the masonry profit. अब इस second suit में B raises the objection of order to rule 2. that the bar of order to rule 2 will apply. जब पहला सूट किया ए ने बी के ऊपर, ठीक, पहला सूट किया था ए ने बी के ऊपर फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन. अब मान लो एसआरए में किया था उसने, सेक्शन 5 एसआरए में, मान लो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में किया था उसने, और उधर रिकवरी ऑफ पोजेशन का रिलीफ क्लेम किया, लेकिन मैस ने प्रॉफिट्स क्लेम नहीं किया. A suit is decreed in favor of A. After that, now he again filed a suit against B, but this time he claims masonry profits. The B raises the objection of order to rule 2. Now, what is the burden of proof of B? The burden of proof of B is, number 1, the cause of action is same, and number 2, that A was entitled to claim masonry profits at the time of filing the first suit. एक और एलिमेंट है जो अलग से नहीं लिखवाया, बट दैट इज अंडरस्टूड, कि उसने कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लिया था. वो तो आएगा ही इसमें. तो इसकी ये ड्यूटी है कि वो ये 3 चीजें प्रूव करे. अगर ये 3 चीजें प्रूव हो जाएं तो ऑर्डर टू रूल 2 का बार लग जाएगा. If he is able to prove all these 3 elements, then the bar of order to rule 2 will apply. ठीक. तो सबसे important element है ये, to prove the cause of action is the same. ठीक. तो अब आप बताइए what will you decide in this case. अब देखो इसमें cause of action तो same है, but order to rule 4 impliedly ये कहता है that a suit for possession and a suit for masonry profit, they are 2 distinct causes of action, and therefore even though it appears, तो ये cause of action same है ऐसा लग रहा है, जबकि है नहीं. It appears that these 2 are 2 reliefs of the same cause of action, but as per order to rule 4, these 2 happen to be 2 distinct cause of action, and therefore order to rule 2 will not apply. Now देखो order to rule 4 is to be read in context with order to rule 3.
रूल 3 तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, बट ऑर्डर 2 रूल 3 says that a plaintiff can join more than one cause of action in the same suit. So order 2 rule 3 is mainly for plaintiff who join more than one cause of action in the same suit. There are some conditions which are to be fulfilled. ठीक, उसके बाद order 2 rule 4 कहता है that no cause of action shall unless the leave of the court. No cause of action shall, unless with the leave of the court, be joined with a suit for the recovery of immovable property. Order 2 rule 4 is saying, अब देखो रूल 3 ने तो कह दिया कि you can join any cause of action, लेकिन लिमिटेशन लगा रहा है ऑर्डर 2 रूल 4 और कह रहा है कि अगर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो आप किसी और कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन तब तक नहीं करोगे जब तक आप कोर्ट से परमिशन ना ले लो। लेकिन एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि फॉलोइंग कॉज ऑफ एक्शन कैन बी ज्वाइंट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक, सो ऑर्डर 2 रूल 4 हैज टू बी रेड इन द लाइट ऑफ द ऑर्डर 2 रूल 3। ठीक, in the light of order 2 rule 3, and as per order 2 rule 3, a plaintiff can join any more than one cause of action in the same suit subject to the conditions of order 2 rule 3. Then order 2 rule 4 in respect of suit for recovery of immovable property puts a limitation, and limitation is that if you file a suit for the recovery of immovable property, then in that suit you shall not join any other cause of action unless you have taken the permission of the court. ठीक, लेकिन साथ में वो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि निम्नलिखित कॉज ऑफ एक्शन को आप बिना कोर्ट के परमिशन के ज्वाइन कर सकते हो। The following cause of action can be joined even without the permission of the court in a suit for recovery of immovable property. ठीक, अब what are those exceptions? Number 1 is claims for means profits or arrears of rent in respect of the property claimed or any part thereof. अब देखो जिस तरीके से लिख रहे हैं, you cannot join any other cause of action except with the permission of the court, accepting the following. Accepting the following what? Accepting the following cause of action. और इसमें पहले ही वो लिख रहे हैं आपका arrears of rent और mesne profits. Means what? तो immovable property के recovery के साथ आप mesne profits का cause of action club together कर सकते हैं। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो गया कि मैसने प्रॉफिट्स का एक अलग काउज ऑफ एक्शन होता है या एरियर्स ऑफ रेंट का एक अलग काउज ऑफ एक्शन होता है। सो इफ यू फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देन दैट इज वन काउज ऑफ एक्शन एंड मैसने प्रॉफिट इज अनदर काउज ऑफ एक्शन, एरियर्स ऑफ रेंट आर अनदर काउज ऑफ एक्शन, and similarly claims for damages for breach of any contract under which the property or any part thereof is held. So again the damages for breach of contract is another cause of action, and claims in which the relief sought is based on the same cause of action. The claims in which the relief sought is based on the same cause of action. So these are again they are talking about being another cause of action. So provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party in a suit for foreclosure or redemption from asking to be put into possession of the mortgaged property. So that is fine. तो जब आप foreclosure और redemption का सूट करते हो तो आप साथ में possession भी क्लेम कर सकते हो। ठीक, हमारा पर्पज सिर्फ इतने में फुलफिल हो जाता है कि ऑर्डर 2 रूल 3 में कॉजेज ऑफ एक्शन का जेंडर अलग किया है और ऑर्डर 2 रूल 4 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के रिकवरी का जो कॉज ऑफ एक्शन है
उसके साथ आप कोई और कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट के परमिशन के बिना नहीं ज्वाइन कर सकते, ये लिखा है। लेकिन साथ में कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए हैं, दैट द फॉलोइंग कॉज ऑफ एक्शन कैन बी ज्वाइंट विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एंड देयर दे आर स्पेसिफाइंग areas of rent and masonry profits. So means it is implicit that masonry profits are not just a relief, they are a distinct cause of action vis-a-vis the cause of action of recovery of possession. तो ये जब दो distinct cause of action है, so obviously you are always free to file two distinct suits. And therefore the relief of possession, if it does not claim masonry profits, the subsequent suit of masonry profits, it will be allowed, and order 2 rule 2 will not apply because claims of masonry profits gives you a distinct cause of action. ठीक, समझ में आया? इसको अब आप लिखिएगा। Order 2 Rule 4 impliedly declares that the cause of action of masonry profits is distinct from the cause of action of recovery of possession of immovable property. Order 2 Rule 3 allows the joinder of cause of action, whereas Order 2 Rule 4 puts a restriction regarding such joinder with respect to the cause of action for recovery of immovable property. It declares that no other cause of action can be clubbed together without the permission of the court. But at the same time, it creates an exception wherein it declares, apart from the other cause of action declared in Order 2 Rule 4, that the cause of action for masonry profits and arrears for rent can be joined with the cause of action of recovery of possession of immovable property without the permission of the court. Thus, it is clear from Order 2 Rule 4 that the claim from recovery of possession and claim for masonry profits are two distinct cause of action, and therefore Order 2 Rule 2 will not apply. Therefore Order 2 Rule 2 will not apply. ठीक, समझ में आ गया सबको? अब now you see the explanation. For the purpose of this rule, an obligation and a collateral security for its performance and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. अब इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ रहा हूं मैं। For the purpose of this rule, an obligation and successive claims arising under the same obligation, ये एक पार्ट है। For the purpose of this rule, an obligation and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. दूसरा पार्ट ऐसे पढ़ोगे, for the purpose of this rule, an obligation and a collateral security for its performance shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. So दो चीज ये कह रहे हैं. One, they are saying an obligation, you understand obligation, a legal duty. Obligation plus successive claims under the same obligation. An obligation plus the successive claims under the same obligation. और दूसरा, an obligation plus collateral security, obligation plus collateral security for that obligation. तो एक इस तरीके से एक obligation और successive claims दोनों को, obligation और successive claims दोनों को सिंगल कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा, सिंगल कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। मतलब ऑब्लिगेशन और सक्सेसिव क्लेम्स अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, दे आर सिंगल कॉज ऑफ एक्शन। और उसी तरीके से
द ऑब्लिगेशन और उसके लिए जो सिक्योरिटी दिया गया आपने, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल कॉज ऑफ एक्शन। ऐसा आप नहीं कर सकते कि ऑब्लिगेशन के लिए अलग सूट किया और कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए अलग सूट किया। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन। उसी तरीके से एक ऑब्लिगेशन पे अलग सूट किया और सक्सेसिव क्लेम्स के लिए अलग सूट किया, दैट यू कैन नॉट डू, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब इसके लिए तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जो इलिस्ट्रेशन है, दैट इज इलिस्ट्रेशन इज ऑन दिस। इसका इलिस्ट्रेशन नहीं दे रखा, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू, बट ये जो पहले वाला पार्ट है उसका इलिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा नीचे और उससे क्लियर भी हो जाएगा ये। नाउ यू सी द इलिस्ट्रेशन। सो नाउ सी द इलिस्ट्रेशन। A lets a house to be at a yearly rent of 1200। 1200 रुपये का एनुअल रेंट है उस पर, मकान दिया रेंट पर, तो 1200 रुपये का रेंट है ईयरली, और ज़्यादा रेंट है, बट ये 1905 की बात है, 1908 की। At that time it was very heavy rent. So A lets a house to be at a yearly rent of 1200. So the rent for the whole of the years 1905, 6, 7 is due and unpaid. अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हुआ कि मैं अपना मकान तुमको किराए पर दे रहा हूँ, एंड यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे द रेंट, सो दैट इज द मेन ऑब्लिगेशन। तो ये जो ऑब्लिगेशन लिखा है ना हमने ऊपर, so that is the main obligation, the obligation to pay the rent, the obligation to pay the rent, and that rent is how much, 1200 rupees per year. अब उसके बाद they are saying successively for 1905, 6 and 7. So for these 3 successive years rent was not paid. तो succession claim आ गया, तो सक्सेसिव क्लेम आ गया 1905 का रेंट, 1906 का रेंट और 1907 का रेंट। तो ये 3 सालों का रेंट, 3 इयर्स का रेंट नहीं दिया है। तो दीज आर सक्सेसिव रेंट्स नो। तो उसी ऑब्लिगेशन के अंदर देयर आर 3 सक्सेसिव वायलेशंस। 3 times he has not paid the rent to you। ठीक, अब विल यू फाइल द सूट सेपरेटली फॉर 1905 और 1906 और 1907 का अलग अलग सूट करोगे, या और यू विल क्लेम ऑल ऑफ देम इन सेम सूट? सो दैट इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन सेज, दैट दे विल बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए अलग अलग सूट नहीं करोगे। तो जिस दिन भी आप सूट फाइल करते हो उस दिन जितने भी एरियर्स ऑफ रेंट हैं, यू हैव टू क्लेम all of them, and if you do not do that then it will be said that you have relinquished the claim, and if you have relinquished the claim then clause 1 और 2 याद करो, बाद में relinquished claim के लिए दोबारा सूट नहीं कर सकते। अब ये relinquishment of relief नहीं है, that is relinquishment of claim। अब इसमें मान लो 1200 रुपये का 3600 रुपये का आपका रेंट बाकी है 3 साल का, और 3600 में से मान लो आपने सिर्फ 1200 का क्लेम किया, 1905 वाला क्लेम, सूट फाइल किया 1908 में और क्लेम किया सिर्फ 1905 का 1200 रुपया, और 2400 जो बच गए तो उसके लिए आप दोबारा सूट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, अंडरस्टूड और नॉट? A lets a house to be at a yearly of rent rupees 1200. The rent for the whole of the years 1905, 1906, 7 is due and unpaid. A sues B in 1908 only for the rent due for 1906. A shall not afterwards sue B for the rent due for 1905 or 1907. ठीक, तो इसका कारण तो आप समझ गए हो। जब इसको 1-2 सेंटेंस में लिख लीजिए आप। तो राइट डाउन द एरियर्स फॉर 3 years, the arrears for 3 years are all under the same obligation to pay the rent, and therefore these 3 successive violations will not be considered to be 3 distinct cause of action,
rather they all will be a part of same cause of action, and therefore all these three successive violation has to be filed in a single suit. आगे लिखो, these three areas of rent are one claim on the same cause of action, are one claim, single claim माना जाएगा ना, one claim on the same cause of action, and therefore if any one of these is not claimed, then it will amount to the relinquishment of a part of the claim. It will amount to the relinquishment of a part of the claim, and hence order 2 rule 2 will apply in a subsequent suit. ठीक। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? ऑब्लिगेशन प्लस कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर दैट ऑब्लिगेशन। अब देखो, कोई मकान वगैरह बनाते होंगे आप, देखो तो काफी लोग कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई जगह से कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं एक साथ, और थोड़ा इसके यहाँ करना, थोड़ा उसके यहाँ करना, और बीच बीच में काम एक दूसरे का छोड़ते रहते हैं। तो उसी प्रकार से मान लो ए ने कोई मकान का काम कराना है, और कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसके मकान काम करने का, और ए से बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो। तो ए ने उसको कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए कुछ, उसने कहा ये पैसे रखो और काम शुरू करो। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको लेबर वगैरह का सबको उनको देना होता है, तो ए ने दिया और उसने काम शुरू किया। तो उसको या तो एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी मान लो कि वो काम उसी से करवाएगा और तुम काम शुरू करो। अब सपोज दैट आफ्टर दैट ही कमिट्स ए ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने मान लो काम पूरा नहीं किया या काम किया ही नहीं। अब ये get the cause of action or not? He committed a breach of contract, and A got a cause of action. The contract is oral here, but A got the cause of action. अब ये कोई immovable property का contract तो है नहीं, it is a contract of service. So A got a cause of action to file a suit against him. अब A has got two claims. One is claim for the damages for the breach that he has committed, and the other is for the collateral security of 10,000 that A has paid to him. So what they are declaring here is that the cause of action for the damages of breach of contract and the cause of action for claiming the collateral security of 10,000, they are not two distinct cause of action. They are part of same cause of action, and therefore these to be considered to be two relief in same cause of action. The cause of action is breach of contract. अब उसमें आपका एक रिलीफ है claiming damages, दूसरा रिलीफ है, अब इसमें हो सके तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, और दूसरा रिलीफ यहाँ पर है आस्किंग फॉर द कोलेटरल सिक्योरिटी। और आपको दोनों ही एक ही सूट में क्लेम करना है, और अगर आपने एक छोड़ दिया तो आप दोबारा सूट करके वो क्लेम नहीं कर पाओगे। So that is what they want to declare here. They are saying the collateral security and the obligation, they constitute what? One cause of action. दोनों एक ही cause of action constitute करते हैं। Therefore, when you file the suit for breach of contract and claiming damages or of a specific performance, और वहां पर आपने अगर कोई collateral security दे रखा है तो उसी सूट में क्लेम करना चाहिए। ठीक, तो इस पार्ट को फिर से देखो एक्सप्लेनेशन में, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. ठीक, I just gave you an example of obligation and collateral security. अब उस एग्जाम्पल को फिर से देख लो आप। मान लो A has to get some work done by B, A को कोई काम करवाना है B से, तो
A enters into a contract with B, ठीक, A enters into the contract with B। अब A को काम करवाना है और B काम करेगा। B वैसे काम नहीं करेगा, B needs some security। B बोलेगा कुछ एडवांस पेमेंट दो ताकि मैं कुछ काम शुरू कर दूं, अदरवाइज आई विल नॉट वर्क। ए का क्या है, बीच में हटा दे कहीं बी को। सो देयर इज अ काइंड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल मीन्स व्हाट, पैरेलल। तो देयर इज कोलैटरल सिक्योरिटी विच ए गिव्स टू बी। तो बी को ए का कुछ मकान बनाना था, तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और उसके लिए ए ने उसको 10,000 रुपये का कोलैटरल सिक्योरिटी दिया। ए ने कहा 10,000 रुपये रखो और काम शुरू करो। अब बी को गारंटी हो गई, काम उसी से करवाएंगे। तो देखो कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को मकान बनाना है, उसने 2 कॉन्ट्रैक्टर बुला लिए और 2 लोग आए, उसने दोनों से डिस्कस किया। अब ऊपर उसको सारा कुछ दिखाकर तो एक से बोला उसने कि आप काम शुरू करिए। अब उसमें से उसने कहा कि आपकी क्या गारंटी कि आप मुझसे ही काम कराओगे, उसको नहीं बुलाओगे कल? क्या गारंटी आप मुझसे ही काम करवाओगे, कहीं उसको भी ना बुला लो, मैं लेबर वगैरह सारी चीज लेकर आऊं, मेरा टाइम वेस्ट हो पूरा दिन, क्योंकि मुझको तो पूरा 1 डे वेज देना पड़ेगा पूरे लेबर को और मिस्त्री को, तो वो तो फंस जाएगा। तो इसीलिए उसने कुछ एडवांस मांगे, तो इसी के लिए उसने 10,000 रुपये एडवांस दे दिए। तो ये ए की कोलैटरल सिक्योरिटी है कि बी उसके लिए काम करेगा और ए काम बी से ही करवाएगा। अब ए ने दूसरे वाले को मना कर दिया, अब लेकिन बाद में उसने बी ने काम शुरू नहीं किया, ही कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उसकी वजह से ए का नुकसान हुआ। अब ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी। अब जब ए सूट करेगा बी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो हियर ए विल क्लेम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डैमेजेस, whatever losses A has suffered, उसके लिए damages, plus he may also ask for specific performance, but उसके अलावा secondly is the collateral security। अब what this section is saying is कि आप जिस सूट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस क्लेम करते हो, तो कोलैटरल सिक्योरिटी है उसी सूट में क्लेम करो, because collateral security and damages, these are not 2 distinct cause of action। आप ये नहीं कर सकते कि अभी मैं डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ और अगले सूट में मैं कोलैटरल सिक्योरिटी क्लेम करूंगा 10,000 रुपये, by saying that is a different cause of action। So that is what they are saying here, that these two are the part of same cause of action। Means what? That these two reliefs shall be claimed in the same सूट। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसको लिख लीजिए आप, इसको लिखिए आप कोलैटरल सिक्योरिटी पर। ये एग्जाम्पल तो बना लिया होगा आपने। नाउ राइट, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द कोलैटरल सिक्योरिटी एंड द क्लेम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं है, बट अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, और एनी अदर ऑब्लिगेशन लिख लो, और क्लेम for any other obligation, a breach of contract or any other obligation are a part of same cause of action, that is these two shall be claimed in the same suit, and if one of them is relinquished, then it cannot be claimed in a subsequent suit। ठीक। अब इसमें एक आखिरी पॉइंट है, वो और लिख लीजिए, उसके बाद दिस टॉपिक इज ओवर। इसमें एक सेंटेंस लिख लो जिसको हम बाद में समझेंगे, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे, पर अभी लिख के रख लो इसको। ऑर्डर 2 रूल 2 कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, रेदर इट विल बी अ ग्राउंड फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट। अब देखो, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में हमेशा तब हो सकता है जब उसके लिए आपको कोई एविडेंसेस प्रूव ना करने पड़े, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होता है।
आपके प्लेंट में कोई कमी है और दिख रहा है तो रिजेक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही आपको एविडेंसेस रिकॉर्ड करना पड़े, जैसे ही एविडेंसेस रिकॉर्ड करना पड़ेगा कोर्ट को, रिजेक्शन नहीं हो सकता, इट विल बी अ डिसमिसल। अब यहाँ पर इन द केस ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 डज नॉट द कोर्ट टेक एविडेंसेस, द डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रीवियस सूट प्लेंट इज अ एविडेंस, document of the previous suit plaint is an evidence, and plus the court can also call the witnesses to examine the cause of action. So here the court is recording evidences, and since the court is recording evidences, तो जहाँ भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा तो उस ग्राउंड पर रिजेक्शन कभी नहीं हो सकता, and therefore I will say that it is a ground for dismissal। ठीक, तो जब रिजेक्शन पढ़ोगे आप तब और ज़्यादा क्लियर होगा ये आपको। इधर बस इतना ध्यान रखना कि प्लेंट में अगर कोई कमी है जो सामने दिखती है, उसके लिए कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस ग्राउंड पर रिजेक्शन होता है। लेकिन अगर एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ गया किसी बात के लिए तो इस ग्राउंड पर रिजेक्शन नहीं होता कभी। दैट विल ऑलवेज बी अ डिसमिसल ऑफ द सूट। इन द केस ऑफ द order 2 rule 2 is order 2 rule 2, since the plaintiff has to prove the previous plaint की copy and the similarity and all, previous plaint की copy and similarity of the cause of action and all, so the evidences are recorded and therefore the rejection will not be done and it will be a dismissal under the suit, it will only be a dismissal of the suit। ठीक, बाकी का आपको जब रिजेक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, अब इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज फॉरेन जजमेंट। बट दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।